No, sir. Okay, so let us now first see the overview of entire philosophy of Descartes. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. सो डेकार्ट की पूरी फिलोसफी का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमको आइडिया हो एक्चुअली में कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेकार्ट, वेयर डेकार्ट इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज from Aristotle and Plato it has almost been a gap of 1500 years. Descartes is considered as the legislator of modern Western philosophy. So from ancient philosophy we have shifted to modern Western philosophy. There is a gap there. So we have to understand, therefore, what is the history and problem in front of Descartes. Okay. सो हम दो चीजें देखेंगे, एक तो पूरी डेकार्ट की फिलोसफी का ओवरऑल आइडिया हमको अभी आज क्लास में लग जाएगा, क्या टॉपिक है, क्या उसमें डिस्कशन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फ्लो ऑफ डेकार्ट्स फिलोसफी, इनके बारे में क्वेश्चन कैसा आया है, ऑल दैट पार्ट वील बी एबल टू सी इन द नेक्स्ट वन आवर. ओके, नाउ सिंस आई सेड दैट देयर इज अ 1500 years gap. Now philosophy can go in the positive direction, philosophy can go in the negative direction. Right now philosophy is in a negative direction. There is a problem in front of Descartes. Can anybody tell me what is the problem in front of Descartes? Yes. So dualism of mind and body. Dualism of mind and body will be a product of Descartes philosophy. क्योंकि एरिस्टोटल याद कीजिए वो फॉर्म्ड मैटर का प्रयास कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू रिकंसाइल माइंड एंड मैटर, राइट? Yes, sir. Anybody else? What is the problem in front of Descartes? What is the background of Descartes? So maybe gap. Maybe there is a gap. Yes. See, Descartes by his training is a mathematician. In mathematics, is there certain knowledge or probable knowledge? Yes. Mathematics is based on certain knowledge, indubitable knowledge. 2 plus 2 is equal to 4. A is equal to B and B is equal to C. From this two statement, A is equal to C is probable or indubitable? Yes. Indubitable. Please mute कर दीजिए. Somebody's mic is on. Is it probable or indubitable? Indubitable. Indubitable. Now Descartes came from here, but in philosophy there was not a single proposition which was not under challenge. There was counter or conflicting point with respect to all major aspects of philosophy. और वो चाहते ये बात थे, और philosophy में everything is under question. So therefore, just see what is written in the problem of Descartes. Descartes was very much worried about the uncertain state of philosophy in his times. He saw that philosophy was cultivated for many centuries by the best minds, yet there was not a single proposition which was not under dispute. So he wanted certitude of knowledge
in the field of philosophy and wanted a method of philosophizing. He wanted to bring the certitude that existed in mathematics in the field of philosophy. For this, what did he come up with? The method of Descartes. He came up with a method for what purpose? To bring certitude of arithmetic in the field of philosophy. Therefore, first in Descartes' philosophy, there is method of Descartes. That method is called method of doubt. Descartes क्योंकि mathematician थे, तो he was sure that deduction alone could yield certain results. Deduction का मतलब क्या है? If the premises are true, the conclusion will be necessarily true or probably true. If the premises are true, and so long as the premises are true, what can you say about the conclusion with 100% guarantee? Necessarily true. They will be necessarily true. तो डेकार्ट चाहते थे कि डिडक्शन जैसी कोई चीज फिलोसफी में भी ढूंढी जाए. And he knew that deduction is based on certain self-evident axioms. Self-evident axioms. मैथमेटिक्स में आप कुछ चैप्टर्स पढ़ते होगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्राइंगल चैप्टर आपने पढ़ा, तो ट्राइंगल के कुछ अपने प्रॉपर्टीज है ना. इफ आई आस्क यू अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल, so in an equilateral triangle all the angles are yes equilateral, that is 60 degree. ये जो पॉइंट है इसको कोई चैलेंज नहीं करता है ना, that in an equilateral triangle how the angles are 60 degree. Yes. Or in an isosceles triangle two sides are equal, one of them is at 90 degree, etc., something like that. So any chapter of mathematics is based on certain self-evident axioms. ये भी ऐसा self-evident axiom philosophy में खोजना चाहते थे जिसके आधार पे he can build up the rest of the philosophy. और इन्होंने कुछ अपने लिए मापदंड तय किए. He set up certain broad principles for this self-evident axioms. What are those? क्योंकि यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा है. This nobody is putting in their notes, but UPSC in a subtle way has asked, what are the broad guidelines Descartes set up for his method of doubt? इन्होंने बोला कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं मानूंगा which is not clearly and distinctively perceived. So clearness and distinctiveness is one of the criteria for getting these self-evident axioms. He will divide the problem into as many parts as necessary. फिर सबसे छोटे पार्ट को प्रूव करेंगे एंड देन ही विल मूव टू द लेटर पार्ट्स एंड ही विल मेक एन्यूमरेशन सो कंप्लीट दैट नथिंग इज एक्सक्लूडेड, नो फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन. दिस इज द ब्रॉड प्रिंसिपल ही सेट अप इन हिज मेथड ऑफ डाउट, in his method, and therefore in the search of self-evident axioms he comes up with a method called method of doubt. So डेकार्ट के सामने एक प्रॉब्लम है. फिलोसफी इज अंडर अटैक, फिलोसफी इज अंडर चैलेंज. डेकार्ट wants the certitude of mathematics in philosophy. He knows only deduction can give him that. Deduction के लिए वो कुछ मापदंड तय करते हैं, that it should be clear and distinct, divided into as many parts, etc. And then in search of this self-evident axiom, he begins with method of doubt. He goes on to doubt everything. Now I'm not going to teach method of doubt right now because हमको एक पूरा overall देखना है. So he will be doubting on all sorts of knowledge, चाहे वो mathematics का knowledge हो, चाहे वो science का knowledge हो, to come at something which cannot be doubted. That is, that I doubt cannot be doubted. He says you can doubt dream. भाई सपने को भी आप डाउट कर सकते हैं. अभी आपकी जो हकीकत है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ड्रीम? मे बी यू जस्ट नीड टू वेक अप. अभी आप जो इस क्लास में बैठ के मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं, कुछ इसमें का पार्ट यू कैन ऑल्सो, यू मे हैव ऑल्सो, और यू माइट इन द फ्यूचर ऑल्सो सी इन योर ड्रीम.
right? There is, he says that ये 2 + 2 = 4 है. ऐसा हो सकता है हमको किसी डीमन ने ट्रिक कर दिया होगा. Even statement of mathematics can be doubted. One thing that cannot be doubted is that I am doubting. That I doubt cannot be doubted. ये वो self evident axiom निकल के आ गया, which is going to be the foundation of rest of his philosophy. That I doubt cannot be doubted. Okay, so इससे cogito ergo sum कैसे निकल आता है? There is also a difference between Descartes doubt and psychological doubt. That I doubt cannot be doubted से cogito ergo sum कैसे आ गया? हमने कार्टेशियन मेथड से चालू किया. He wants to find certitude of mathematics in philosophy. इसके लिए मेथड ऑफ डाउट लेके आए to find self evident truth. वो self evident truth क्या है? That I doubt cannot be doubted. और यहां से वो कहते हैं I think, therefore I am. इसको उन्होंने कह दिया cogito ergo sum. He says I cannot doubt myself as a doubting being. I cannot doubt myself as a thinking being. So I think, therefore I am. Therefore he arrived at the first self-evident axiom, cogito ergo sum. Understood this point? Yes. From how problem of Descartes we came to cogito ergo sum. Yes. Yes or no? Although we will do this in detail, but यहां तक हम आए कैसे, that we have to understand right now. गौरी, you may doubt whether ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सही है कि नहीं है, whether mathematics सही है कि नहीं है, whether I am saying is correct or not. Sir. But can you doubt yourself as doubting? Do you doubt the fact that you are able to doubt? Yes. Sometimes. Sometimes. You doubt that whether you are doubting or या फिर कोई और doubt करवा रहा है आपसे, हैं? The No, question sir. is No, that sir. you are doubting. Is that doubtable? No, sir. No. At least you are aware that I as a person, I as Gauri am doubting over this thing. Yes. Yes, sir. Correct. Yes. So यहाँ पर देख लीजिए एक चार्ट बनाया गया. I doubt cannot be doubted. I exist as doubting being. I think, therefore I am. So you will be making this table to arrive at cogito ergo sum. Okay. अब ये cogito ergo sum, अब इनकी फिलोसफी में पहला चीज जो एस्टेब्लिश हो गई I. अब ये I क्या है? डेकार्ट को 100% पता नहीं था. He did not know 100%. He said that I doubt cannot be doubted, but I know I am, but not what I am. This is also a very deep question. Probably Descartes did not understand the meaning or repercussion of his own philosophy, which any lay Indian philosopher can also explain. You will always doubt in India, who is this I, right? Yes or no, Shavit? This I, is she a person with this identity? Is she a student of UPSC preparation? Is she a daughter? Is she a mother? Is she a good citizen? Is she tall? Is she short? Is she good natured? Is she looking good? Is she looking bad? Etc. etc. All these questions of I have been raised. In fact, on this question of I, there is that epic treatise written, Bhagavad Gita. Yes, sir. It is in search of this question only, right? Who am I? Yes or no? Yes, The sir. conversation of the Yes, Atman with the Paramatman. But Descartes को इतना पता नहीं था. मतलब इन लोगों को वैसे भी नहीं पता होगा ये सब तो. From the perspective of the depthness of Indian philosophy, these people are at a very shallow level. We call it as mental gymnasium. So
I know I am but not what I am. From here he concludes I am substance. बाद में इसको criticize भी करेंगे. This will be criticized later by Husserl कि यहाँ तक तो भाई साहब आप ठीक आ रहे थे. You were not accepting anything which is not clear and distinct. But how you have arrived at I am substance, that is not clear and distinct. Which Husserl will try to find out in his own philosophy called, yes, phenomenology. phenomenology. Phenomenology में भी Husserl इसी I के पीछे पढ़ने के लिए he is doing eidetic and transcendental reduction. वो भी बेचारे इसी खोज में पड़े हैं, who is that I. इस I के ऊपर naturalistic beliefs लगे हुए हैं, इस I के ऊपर साइकोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, इनको हटाना है हमको इधर थ्रू आइडेटिक रिडक्शन और थ्रू ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन टू अराइव एट द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. सो ह्यूसरल की भी बाद में डिबेट होगी. ही विल बी appreciative of what Descartes was trying to do, but also later criticize Descartes. Okay, so therefore in his comments, we have mentioned that Descartes has taken a leap of faith from I think I exist. He deduces that I am a substance. Husserl's phenomenology, Descartes is confused between empirical self and transcendental consciousness, etc., etc. It will all make sense when we do this thoroughly. अभी हमको पूरी एक बार philosophy का, इनकी philosophy का overview चाहिए. But so far we are clear that from his problem he arrives at I am substance. He proves cogito ergo sum. एक पहला self evident axiom आ जाता है. I is proved in his philosophy. Then he will prove God in his philosophy in step 2, and then he will prove world or matter in his philosophy as step 3. See, entire Western philosophy will now be in conflict in explaining I stands for soul, consciousness. So dualism will be born, or rather I should say reignited in the philosophy of Descartes. और सोल और मैटर की लड़ाई में कई बार भगवान का साथ दिया जाएगा. लास्ट में इनकी फिलॉसफी में ना सोल बचेगा, ना मैटर बचेंगे, ना गॉड बचेगा. इन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूम, डेकार्ट जो ये डुअलिज्म को जन्म देंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सोल एंड मैटर. स्पिनोजा की फिलॉसफी में मैटर विल टेक अ बैक सीट. इन द फिलॉसफी ऑफ बर्कले मैटर विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. सिर्फ सोल बच जाएगा. एंड इन द philosophy of Hume there will be no mind, sorry, no matter. Hume will conclude never mind. So this is what I must have written in the evaluation of dualism of Descartes. एक बार दिखाते हैं कार्टेशियन डुअलिज्म के बारे में, and then I'll come back again. The comment on dualism of Descartes. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ. Every philosopher from the time of Descartes has tried to solve the puzzle of dualism, and in the process had to shed one of the three substances believed real by Descartes: God, mind and body. इनके बाद जो भी फिलोसोफर आएंगे उनको ये माइंड बॉडी की डुअलिज्म को सॉल्व करने में एटलीस्ट वन ऑफ देम, और इन द फिलोसफी ऑफ ह्यूम rational theology is not possible, rational cosmology is not possible, rational psychology is not possible. All three will be refuted. The entire Western philosophy will culminate into the skepticism of Hume, and it would require Kant to rehabilitate them. So the dualism, the seeds of dualism born in Descartes lead to culminate in the skepticism of Hume. ऐसा भी एक यूपीएससी सवाल पूछ सकती है on this topic. Okay, so इसका मतलब है कि पहले डेकार्ट जो है कोजिटो इर्गो सम से आई को प्रूव करते हैं. आई को प्रूव करने के बाद एक और टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ. डेकार्ट इस पे भी बात करते हैं कि वाई क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ. एंड
बाद में जब ये साबित नहीं कर पाते हैं कि क्लियर और डिस्टिंक्ट को ही क्यों क्राइटेरिया लिया है, तो ये कह देंगे कि ये गॉड स्टैंड्स एज द ontological assumption of the methodological criterion. ये जो methodological criterion है इनका, that is clear and distinct, उसका साक्षी कौन है? गॉड। क्यों आपने क्लियर और डिस्टिंक्ट को ही क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ माना है? कहते हैं भगवान उसके साक्षी हैं, बिकॉज ऑफ द वेरासिटी ऑफ गॉड। ये कह देंगे कि वेरासिटी ऑफ गॉड स्टैंड्स एज द प्रूफ फॉर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ। बहुत अच्छी एक लाइन है, ontological assumption of the methodological criterion. The veracity of God is the ontological assumption for the methodological criterion. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, व्हाट इज इट्स मीनिंग। इट स्टैंड्स अलोन एज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, और बाकी लोगों के हाथ पांव कांप जाएंगे अगर ये सवाल पूछ दिया गया तो इसका मतलब क्या है। ओके, सो देयरफॉर आफ्टर आई डेकार्ट ट्राइज टू प्रूव गॉड, और गॉड को प्रूव करने के लिए भी ही इज यूजिंग कोजिटो। एक बार जब कोजिटो आ गया विच इज आई, तो बाकी की चीजें ये इसी से डिड्यूस करते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्रूथ्स आर डिड्यूस्ड फ्रॉम आई। कैसे? ये जो आई है या सेल्फ है, आपके दिमाग में तीन तरीके की आइडियाज होती हैं, एडवेंचेशियस, फिक्शिशियस, इनेट। कुछ आइडियाज हैं आपके दिमाग में विच आर बिकॉज ऑफ द थिंग्स आउटसाइड अस। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, सो डेकार्ट की फिलोसफी अभी आपके कानों में, आपके दिमाग में जा रही है। इट इज एडवेंचेशियस, इट इज कॉज्ड बाय द थिंग्स आउटसाइड अस। सम थिंग्स आर फिक्सिशियस। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार ये क्या डेकार्ट पढ़ना पड़ रहा है, जीवन का क्या उद्देश्य है, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, डीएम बनेंगे। सम ऑफ यू आर अंडर एन इमेजिनेशन वर्ल्ड, फिक्सिशियस। बट इन ऑल ऑफ अस देयर आर सर्टेन आइडियाज विच आर इनेट। फॉर एग्जाम्पल, in all human beings, is there an innate idea of self preservation? Yes, is there an idea of self preservation or self harm? आप जो खाना खाते हैं रोज, आप जो सोते हैं, आराम करते हैं, आप अपने आप को कष्ट नहीं देते हैं, is that idea innate or not? Yes, generally Innate. if somebody self harms themselves, we call that a mental disorder, right? अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करते हैं अपने आप को, so we will call those persons abnormal. There is an innate idea for self preservation. तो वैसे ही डेकार्ट कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक innate idea है which is the concept of a perfect God. Now you can obviously decline, you say मेरे दिमाग में तो ऐसा आइडिया नहीं है, और I can always argue that डेकार्ट आपके माइंड में जो है क्राइस्ट का आइडिया है, मेरे माइंड में परफेक्ट गॉड में कृष्णा का आइडिया है। So this innate idea also depends on the culture, geography and upbringing, etc. So later we will criticize definitely Descartes, but Descartes ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो है एक innate idea है, और ये innate idea जो है it comes from the very nature of human reason. It is clear and distinct, therefore God exists. So from I, cogito, he is establishing that cogito has an innate idea of a perfect God. सो ये जो परफेक्ट गॉड है ये क्लियर और डिस्टिंक्ट है, तो परफेक्ट गॉड एग्जिस्ट। लेकिन क्या आप यहीं पे नहीं कह सकते कि अरे भाई इससे ये थोड़ी स्टैब्लिश होता है, इससे ये स्टैब्लिश होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एग्जिस्ट? यस और नो? ऑल ऑफ यू वांटेड टू मैरी कैटरीना कैफ, and supposedly some of you might not, but in reality did you marry Katrina Kaif? No, sir. No. So here, if wishes were horses, beggars could ride. You can have an innate idea of God. It does not have any bearing on the empirical existence of God. Yes or no?
at best, can I say that Descartes can prove the concept of God exists, which is what is actually the ontological argument you study in your paper 2, proofs for existence of God. इसीलिए देखिए क्रिटिसिज्म में पहला ही क्रिटिसिज्म क्या लिखा होगा? Read it, Shavya, what is written? Concept of God, bad metaphysics. हाँ, so Descartes. yes, मतलब you understand from this point, no, why we are calling the concept of God as bad metaphysics? Is this God an object of worship? Is this God having any bearing on the state of affairs? Yes or no? This concept of God that you have established, is it having any bearing on the state of affairs, or is it a priori? A priori. A priori. तो आपने जो गॉड इस्टेब्लिश किया उसको भी हम बाद में जो है क्रिटिक करेंगे. But here there is also a discussion ki how his proof is different from Anselm. Anselm has supposedly in Western philosophy given ontological proofs for God. So how Descartes' proof is not ontological, but first Descartes establishes God and then gives proof. ऊपर देखिए लिखा होगा, Descartes first establishes God's existence as a logical deduction from cogito and then supports it with further proofs. पहले ये इसके आधार पे गॉड को प्रूव करते हैं, and then he gives proofs such as cosmological argument, ontological argument. Descartes कहते हैं कि existence of God is proved from the same idea, just as 3 angles of a triangle means 2 right angles. Idea of triangle का मतलब जो है 3 angles of a triangle is equal to 2 right angle. Similarly, existence of God is proved from the very idea of God or very idea of perfect being. Okay. अब समस्या क्या है यहाँ पर जो आपको और कोई नहीं बताएगा? The circularity of the criteria of truth. Innate idea कैसा है? Clear और distinct. हमारे पास innate idea किसका है? God का. Therefore God exists. But who is the guarantor of clear and distinct ideas? In Descartes' philosophy, who is guaranteeing the veracity of truth is based on the, or the criteria of truth is based on the veracity of God. God. एक तरफ आप कह रहे हैं कि God exists because I have an innate idea in my mind which is clear and distinct, और दूसरी तरफ इससे पहले आप कह रहे थे कि कोई चीज क्लियर और डिस्टिंक्ट है क्योंकि उसका गारंटर कौन है? God. So is there the fallacy of petitio principii or fallacy of circular fallacy? Yes. So generally ये टर्म लोग यूज कर देते हैं, fallacy of petitio principii. Better is the circularity of the criteria of truth. So we will criticize कि Descartes आपका criteria of truth भी establish नहीं हो रहा है और आपका God भी establish नहीं हो रहा है. A similar view is in the Vedas. Why Vedas are verbal testimony or infallible? Because they are the words of God. इसलिए वेदास जो है infallible है. And God's existence is proved because it is written in, yes, Vedas. mentioned in Vedas. So here also there is a circular fallacy. This is very beautifully addressed by Adi Shankaracharya. I'm sure now some of you are capable of defending this point from Indian perspective. I mean Indian philosophy perspective. Why there is no circular fallacy? Yes. Anybody? So one is the plane of epistemology or knowledge. The other is the plane of existence or metaphysics.
At the level of existence, God exists first. At the level of knowledge, Vedas exist first. जब आप knowledge के direction में जाएंगे, so you will be studying the Vedas through which you will discover the existence of God. But is the existence of God dependent on knowledge of Him? क्या भगवान का एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है कि आपने वेद पढ़ के और पता लगा लिया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं? यस? No, sir. No. No. So they are two different planes, two different realities. They are not from the same reality. Epistemology and metaphysics, or knowledge and existence, are at two different realities. God is not dependent for his existence on Vedas. God may be dependent on knowledge of him for Vedas. Vedas are dependent in all sorts of manner on God, both for its knowledge as well as existence. Vedas are words of God. Vedas are knowledge given by God. Therefore, Veda is the dependent reality. God is the independent reality on the plane of existence. So, Descartes खैर ये बात नहीं समझ पाए, जो कि हम और आप आसानी से समझ पा रहे हैं because of the study of Indian philosophy. Okay. So यहाँ पर Descartes ने पहले soul को establish किया और I और cogito. Then he goes on to establish God. अब कौन सी रियलिटी बच गई है establish करने के लिए? Kanchan, which reality is left to be established in his philosophy? I तो हो गया establish. वो तो पहले ही उन्होंने method of doubt से that I doubt cannot be doubted से establish करते हैं. What is the third ultimate reality that he needs to establish? World. World. And world stands as a fulcrum for matter. So now he has to establish the world or the belief in external reality. इसीलिए डेकार्ट जो है कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ में वर्ल्ड के प्रूफ से नहीं देते हैं, बिकॉज ही डाउट्स द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड. जब ये अपने फिलोसफी ऑफ रिलीजन में जब इनके प्रूफ्स आप पढ़ते हैं, तो डेकार्ट्स कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ्स डू नॉट कम फ्रॉम वर्ल्ड, बिकॉज ही हिमसेल्फ डाउट्स वर्ल्ड. सो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डेकार्ट जो है डाउट करेंगे. वो पूछेंगे कि हमारे पास आइडियाज हैं कलर के, टेस्ट के, एक्सेट्रा, इनका कॉज क्या है? ये आइडियाज हमको जो मिल रहे हैं, हमारे सामने ये स्क्रीन है, इसमें ऐसे एक लाइन खींचती आ रही है, इसका क्या कॉज हो सकता है? आई कैन नॉट बी द कॉज बिकॉज इट इज हैपनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी. प्लस आई एम ऑफ द व्यू ऑफ एन आइडिया. मैं तो एक आइडिया हूं. आइडिया और इस मैटर के बीच में जो है देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस. देन गॉड इज ऑल्सो नॉट द कॉज, बिकॉज गॉड विल बी देन बिकमिंग अ डिसीवर, क्योंकि हमको साफ साफ क्लियर और डिस्टिंक्ट दिख रहा है दैट ये तो क्लास में ऐसे हाईलाइट होते हुए दिख रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम दिस स्क्रीन दैट यू आर वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द गॉड, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. सो अगर ऐसा होगा तो गॉड विल बिकम अ डिसीवर. सो हमको क्या दिख रहा है? दैट द कॉज इज एक्सटर्नल बॉडीज देमसेल्फ, एंड देयरफॉर these external bodies or external world also exists. Again, he deduces the reality of external world from cogito itself. Okay, and from here, when he has established soul, when he has established matter, he has given birth to the problem of, yes, Dualism. So यानी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके सिलेबस में इन डेकार्ट will be what? Yes, it will be Cartesian dualism. Dualism is the philosophical theory based on the conception that two elements exist in nature, the material and the conscience, and accepts the fundamental distinction between mind and body, God and natural world. This is the most beautiful definition of dualism
that there exists two elements in nature, the material and the conscious, or the sentient and the non-sentient, and there is a fundamental distinction between mind and body and God and external world. एंड इसीलिए हम कार्टेशियन डुअलिज्म भी 4-5 तरीके का कराते हैं. देयर इज मेटाफिजिकल डुअलिज्म, देयर इज क्वालिटेटिव डुअलिज्म, देयर इज एपिस्टेमोलॉजिकल डुअलिज्म, देयर इज डुअलिज्म ऑफ क्वालिटीज, देयर इज देन माइंड बॉडी डुअलिज्म, जो कि जनरली सब लोग इसी पे सिर्फ फोकस करके यही क्लास में पढ़ाते हैं. ओनली दिस इज टॉट एज कार्टेशियन डुअलिज्म. बट इन डेकार्ट फिलोसफी कार्टेशियन डुअलिज्म इज ऑफ 5 टाइप्स. 5 तरीके की कार्टेशियन डुअलिज्म है. Mind body is just explained or extended in detail in his philosophy. Varna there is metaphysical dualism mein there is a dependent substance and there is an independent substance, and mind and body are two dependent substance. God is the only independent substance. There is a metaphysical dualism also in his philosophy. So then we will study in the class in detail about what is mind body dualism. डेकार्ट जो है हॉर्स और हॉर्स एनालॉजी का एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करते हैं कि माइंड और बॉडी इनके बीच में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश होगा. हाउ देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन माइंड एंड हाउ देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन बॉडी, हाउ दे विल इंटरैक्ट. वो कहते हैं हॉर्स और हॉर्स राइडर, जो हॉर्स राइडर है वो अपनी एनर्जी घोड़े में ट्रांसफर करता है बाय मेकिंग द हॉर्स रन फास्टर, और उसके लिए एक ये रिलेशन भी कहते हैं इंटरैक्शनिज्म. ये एक फिक्शिशियस चीज डिस्कवर करते हैं कॉल्ड पिनियल ग्लैंड. टुडे मॉडर्न साइंस हैज नॉट बीन एबल टू डिस्कवर पिनियल ग्लैंड, बट इनका कहना है कि पिनियन ग्लैंड वो जगह है जहां पर सोल और मैटर इंटरैक्ट करते हैं, और वेयर द माइंड इंटरैक्ट्स विद द बॉडी. और उसको वो एक्सप्लेन करते हैं थ्रू हॉर्स एंड हॉर्स राइडर. वी विल he also gives argument to support dualism, but there are definitely objections to dualism. One definite objection is कि mind बड़ा या matter. There is always a problem. Mind is conscious, matter is extending. How can there be a relation between two opposite things? Okay, so there is problem in establishing relation, there is violation of conservation of energy, epistemological difficulty, metaphysical difficulty, ethical difficulty. Conclusion में हम कहेंगे Descartes, like all dualistic philosophers, any dualistic philosophy, be it Cartesian dualism or Shank's Prakriti Parinamvad, cannot be resolved without establishing monism in duality or turning towards non-dualism like Spinoza's pantheism or Advait Vedanta of Adi Shankaracharya. Any dualistic philosophy has to be reconciled in the form of non-dualism is better or monism of Spinoza. और एक बहुत अच्छी लाइन रसल ने कही है, देयर कैन बी नो रियल रेमेडी फॉर अ फैंसीड मेलेडी. ऐसी बीमारी जो आपने खुद क्योर करी है उसकी कोई रियल रेमेडी नहीं हो सकती. डुअलिज्म इज born out of Descartes' philosophy. अब इसकी कोई क्योर नहीं है. We can say that we ourselves have read the dust and complain that we cannot see. हमने खुद अपनी आंख में धूल फेंक दिया और कह रहे हैं कि हमको दिख नहीं रहा है. A very interesting line raised by Russell. So इस तरह की चीजें आप हमेशा कंक्लूजन में लिखेंगे. Then only we will be getting that additional marks instead of writing a very bland or very cliche kind of conclusions. Descartes is not able to establish, he fails to establish dualism. इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे that there can be no real remedy for a fancied malady. We cannot complain of not being able to see after raising the dust ourselves. Russell in the History of Western Philosophy. Okay, and then final topic हमारा Descartes में ये रहेगा, estimate of Descartes' philosophy, whether he was successful in doing what he sought to do. Okay, उनके मेथड के बारे में कुछ डाउट हम डिस्कस करेंगे, उनके रैशनलिज्म के बारे में, इनेट आइडियाज के बारे में. देन
there will be a discussion on comparison between Descartes and Husserl. Some of you have read contemporary philosophy, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि what is the comparison between Descartes and Husserl. And last point will be, was Descartes a consistent rationalist? He is the founder of rationalism. That is, reason is the, not founder, I mean propounder. So reason is the source of ultimate knowledge. सारा ज्ञान हमको reason से मिलेगा. We have innate ideas in our mind. So was he a consistent rational philosopher? We will discuss that. जब आप कहते हैं I do not know what I am, and from there you are saying I am substance, is this consistent rationalism? We will say no. But we will finally be appreciative of Descartes, that constructive part of Descartes' philosophy is less interesting than the earlier destructive part, is what Russell says. इनका method of doubt और वो सब part बहुत ही interesting था, लेकिन बाद में जो है he is using verbal jingoism, or he is using words to circumvent issues. He is, in the words of Russell, he is searching for scholasticism to come out of problems, which is what we will not accept. Okay, so this is the entire overview of Descartes' philosophy. We started with the problem of Descartes. He wanted to find out the certitude of mathematics in the field of philosophy. He began in search of self-evident axioms. In search of self-evident axioms, he comes up with method of doubt. Method of doubt reveals something that cannot be doubted. That I doubt cannot be doubted. Cogito ergo sum. इससे he establishes the reality of I or cogito. That is, my consciousness reveals something as existing, or reveals myself as existing, is the definition of cogito ergo sum. From there, he establishes the existence of God or reality of God. Then he establishes the reality of world. After establishing I or soul, world or matter, he dwells into Cartesian dualism. And after Cartesian dualism, there is the evaluation of Descartes' philosophy. So entire revision of Descartes' philosophy we have done beforehand, so that you have an idea. Because एक बार Descartes का हमको आइडिया लग गया, तो Spinoza, Leibniz, Locke, they will be very very useful to follow. यहाँ से एक major change आ रहा है. That is why I use this technique of revising it at one go before even starting. Okay. Is this clear? Yes. Yes, sir. If this is clear, therefore let us see with this limited understanding of Descartes. ये जो हमने 45 मिनट ही Descartes देखा है, क्या इससे हम क्वेश्चंस हमको समझ आ रहे हैं कि यूपीएससी ने क्या पूछा है? हाउ डज डेकार्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स अदर देन हिमसेल्फ एंड गॉड? सो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहे हैं? खुद को एस्टैब्लिश, आई और गॉड के अलावा. हाउ डज डेकार्ट प्रूव? सो दे आर आस्किंग अबाउट बिलीफ इन, यस, आई मीन्स सोल, गॉड. तो तीसरी रियलिटी क्या बच गई? वर्ल्ड. Have we discussed how Descartes proves the reality of the world? Not in complete sense, but some idea. Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो ये मत घबराइए कि अब ये तो हो गया, यहाँ के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. In the morning tomorrow we will discuss Descartes from zero. What is the background of Descartes? What is nature and number of ultimate reality? What is monism? What is dualism? All that part we will discuss एकदम आराम से, उसके लिए टेंशन नहीं. What according to Descartes is clear and distinct idea? What is the epistemological status of clear and distinct idea? Does this account help Descartes prove that material objects exist? So is this question on criteria of truth? Yes? Yes. Yes, it is
क्वेश्चन ऑन क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्टेटस में आप लिखेंगे द वेरासिटी ऑफ गॉड इज द ontological assumption for the methodological criterion. So we will therefore also be criticizing, does this account help Descartes to prove that material object exists? Yes, it is a similar repetition of how Descartes proves the external world. Descartes कहेंगे कि हमको clear and distinct idea मिल रहा है of smell, color, taste coming out of the physical things, therefore physical things exist. Okay. Examine Kant's criticism of Descartes' view of self. So Kant जो है अपनी philosophy में he will be discussing about noumena and phenomena and he will talk about the fallacies of reason. Reason का उपयोग क्या जानने के लिए नहीं करना चाहिए. If you use reason to know yourself, he will call this as, 3 fallacies के बारे में बात करेंगे वो. One is antimonies, the other is the paralogism of reason, and the third fallacy is the ideal of reason. यानी आप वर्ल्ड को, खुद को, सोल को और गॉड को रीजन के उससे नहीं जान सकते. Okay, so he will be criticizing Descartes on that ground that you have exceeded the boundaries of reason. Reason cannot work without concepts, cannot work without percepts. और इन सब चीजों के लिए कोई परसेप्ट है ही नहीं. गॉड को जानने के लिए गॉड इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, देयर आर नो परसेप्ट्स. ओके. Does Descartes' cogito principle entail that he is an essentialist? Essentialist is a contemporary Western philosopher. Contemporary Western philosophy में you are studying about essentialism. So is his philosophy an essentialist philosophy? Existence precedes essence, इस तरह की बात के opposite है यहाँ पे. यहाँ पर essence precedes existence. What is the essence? You are existing I. इस I का essence क्या है? That it is thinking or doubting. I think, therefore I am. So existence is preceded by its essence. So he is definitely an essentialist, and Descartes will therefore be criticized by the existentialist philosophers like Sartre, like Kierkegaard. वो कहेंगे कि first you have to exist and then you have an essence. First I am and then I decide what I am. So there is kind of a comparison between Western philosophy and contemporary Western philosophy. But बाकी next question देखिए, doctrine of Cartesian dualism and examine arguments in favor of it. Critically examine. So you have to examine what are the arguments in favor of dualism, what are the arguments against. Explain Descartes' method of doubt. Can this method be used to justify his belief in God? Argue your case. How does Descartes' cogito affect Hume and Kant? Why does Descartes not doubt the existence of God? Explain. ये देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है. 2013 and 2011. Descartes does not doubt the existence of God because we have an innate idea. He establishes God after establishing cogito as a logical deduction. आपके दिमाग में गॉड का innate idea है, वो establish करके और फिर गॉड के लिए वो proofs देते हैं. So this is the brief overview of Descartes' philosophy. The questions asked on Descartes. I know you may not be having a lot of doubt because of the, अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया Descartes को. But in general, if there is any question with respect to Descartes, please ask. Otherwise, morning we will complete this topic 7:30 a.m. Yes, you are also having the history class at 7:45 p.m. and
Please attend the class. The teacher takes a lot of effort in making your notes, etc. And most of you are watching on recording. His way of teaching is not one of recording. तो ऐसा आप मत कीजिए. Especially people who are regular in class, they are also absent. I think Gauri, Rituraj, Shavya, Vikash, आप लोग भी उस class में absent थे. So the classes have been tweaked. The timing has been reduced to 3 hours or less than 3 hours. कोई 4-4 घंटे की क्लास नहीं होगी. देखिए, कोई भी टीचर जब शुरू में आता है पढ़ाने ना, तो वो बहुत आइडियल टीचर होता है. He wants to give you everything. He does not teach from a commercial perspective or from a simplistic perspective. He wants to give all the knowledge that will be useful for your exam. Then he has to tweak according to the student's demand. So classes miss मत कीजिए और recording से मत देखिए. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब डेकार्ट में कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए भाई. Otherwise I'll wrap up for today. You can take rest before your history marathon classes. He has infinite capacity to take class, unlike me. I have very short capacity. Any doubt? So ये जो पहला ही पेज है वो सारा एक समरी है. इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ डेकार्ट, मेथड ऑफ डेकार्ट, कोजिटो एर्गो सम, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रूथ नहीं, क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ. Criteria of truth, existence of God and the proofs for God. Then external world, relation between God and criteria of truth, mind and body dualism, estimate of Descartes, Descartes versus Husserl, and was Descartes a consistent rationalist? This is the entire Descartes philosophy. इसके बाहर एक सवाल यूपीएससी नहीं पूछ पाई. Not even one single question in the last so many years. So is there any doubt? If not, we'll conclude and you can take rest and prepare for your history class. Gauri, No, no. No, sir. Amita, No, sir. Rituraj, Abhishek, Dipesh, No, sir. Shavya. No, sir. Okay, so we'll meet tomorrow in the morning at 7:30 a.m. regardless of whether the class is announced or not. 7:30 a.m. we are meeting for Descartes. Okay, thank you for your time and patience. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.